Hello friends, today we are going to create an RGB paint box. Now what is an RGB paint box? RGB is an LED which can give us three colors, red, green and blue. हम लोग आज एक RGB पेंट बॉक्स बनाने वाले हैं. RGB एक LED जैसा कुछ होता है जिसमें तीन कलर्स क्रिएट हो सकते हैं, लाल दैट इज रेड, हरा दैट इज ग्रीन और नीला दैट इज ब्लू. तो आज हम उसका हमारे प्रोजेक्ट में निर्माण करेंगे. तो आइए देखते हैं हम क्या क्या यूज करेंगे. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज Arduino Uno. हम लोग Arduino Uno का इस्तेमाल करेंगे. एक ब्रेडबोर्ड, एक RGB, मैं यहाँ पे डालता हूँ, एक RGB और पोटेंशियोमीटर. सो हम इसके लिए तीन पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल करेंगे और एक रेजिस्टर. ओके, तो वी आर गोइंग टू यूज थ्री पोटेंशियोमीटर्स, अ रेजिस्टर एंड एन RGB. So we are done with our component list. So let's make the arrangement. So the first thing which I am doing is my RGB. I am putting the RGB. Now if you see the RGB, its first terminal from the left is red, then cathode that is the negative, blue and green. So we have four-legged RGB. RGB को चार पैर होते हैं जिसमें से पहला लाल है, दूसरा नेगेटिव है, तीसरा नीला है और चौथा हरा है. So we have these four legs. Now let us connect the breadboard. So for connection, what I am going to do is I am taking 5 volts. I am connecting it here. मैंने 5 वोल्ट लिया Arduino से और ब्रेडबोर्ड पे यहाँ कनेक्ट कर दिया. अभी ग्राउंड कनेक्ट करूंगा मैं. सो आई हैव टेकन ग्राउंड. ग्राउंड हम ब्लैक कलर से दिखाते हैं, काले कलर से. ग्राउंड हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में नेगेटिव होता है. सो दैट इज 5 वोल्ट्स एंड ग्राउंड. नाउ लेट अस ट्राई टू कनेक्ट द अदर डिवाइसेस. तो मैं यहाँ से ग्राउंड निकाल के यहाँ पे भी ग्राउंड कर देता हूँ ताकि हमारी ये पूरी रेल ग्राउंड हो. ये पूरी ग्राउंड है और ये भी ग्राउंड है. उसी तरह मैं 5 वोल्ट्स को भी कर देता हूँ. यहाँ से निकाल के मैंने यहाँ लगा दिया तो ये मेरा 5 वोल्ट है. मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ. ओके, तो देखिए, तो मैंने ये ब्रेडबोर्ड पे कनेक्शंस लगाए हैं. अभी जो मेरा कैथोड है, मतलब जो नेगेटिव है, वहां मैं एक रेजिस्टर लगा देता हूं. तो देखिए ये रेजिस्टर कैसे कनेक्टेड है. ये सारे पैर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. तो यहाँ पे रेजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ से जो नेगेटिव है मैं इसको ग्राउंड को कनेक्ट कर दूंगा. सो यहाँ से मैं इसको ग्राउंड को कनेक्ट कर देता हूँ. तो ये मेरा RGB का पहला कनेक्शन हो गया. अभी RGB के और पोटेंशियोमीटर के बीच के कनेक्शंस बाकी है. तो मैं तीन पोटेंशियोमीटर लगा रहा हूँ, 1, 2 और 3. I have taken 3 potentiometers. So all 3. अभी तीनों का मैं तीनों के ग्राउंड्स को कनेक्ट कर दे रहा हूँ. सो ये मेरा पहला ग्राउंड हो गया, यहाँ का मेरा दूसरा ग्राउंड हो गया और ये वाला मेरा तीसरा ग्राउंड. So all T1s are connected to terminal T1, terminal 1 connected to ground. Now उसी तरह all T2s will be connected to 5 volts. सारे T2 5 वोल्ट को कनेक्ट होंगे. तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, 1, 2, 3. ठीक है. अभी मेरे पास बचे हैं 3 वाइपर्स. सो इस वाले का वाइपर जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में है, द लेफ्ट मोस्ट पोटेंशियोमीटर, द वाइपर ऑफ द लेफ्ट मोस्ट पोटेंशियोमीटर, आई एम कनेक्टिंग इट टू पिन A0 as it's an analog input or output. So I am giving it
to A0. So this is connected to A0. Now similarly, this is connected to, I'll connect it from here itself. A1. So A0, A1, and last one I am connecting it to A2. So see, so I have connected wiper of the leftmost potentiometer to A0, then A1 and A2. Now similarly, I will be connecting the legs, that is the red terminal, the blue terminal and the green terminal to Arduino digital pins. So आप देख पा रहे हो कि ये सारे टर्मिनल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैं चाहिए तो इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ ताकि सबको दिखाई दे। मैंने सारे पोटेंशियोमीटर सिर्फ थोड़े नीचे शिफ्ट किए हैं। आई हैव जस्ट शिफ्टेड द पोटेंशियोमीटर्स अ बिट below so that you people can see what connections I am making. So now I am going to take this. This is my red terminal. So I am going to connect it to pin numbers 9, 10 and 11. Okay, 9, 10 and 11. The pins on which we have a sine wave are all digital pins basically, which helps in PWM, that is pulse width modulation. So I am connecting this one. कलर चेंज कर देता हूँ. Okay. 9. So I have connected this to 9. Then and last one I am connecting it to, I am changing the color. मैं color change कर लेता हूँ. Yes. So this pin is connected to 9. This pin is connected to 10. सॉरी गलती से ये लग गई है. हाँ देखो ध्यान देना पड़ता है. So see, this is the 9, 10 and 11. Okay. मैं थोड़ा इसको रीअरेंज कर देता हूँ. ओके. तो अभी मेरे कनेक्शंस पूरे रेडी है. ऑल माय कनेक्शंस आर रेडी. तो आइए हम अभी इसको कोड करेंगे, इसको ब्लॉक कोड करेंगे. उसके साथ ही साथ हमको लैंग्वेज में भी कोड देखना है. सो टेक्स्ट में भी हम कोड करेंगे, ब्लॉक्स में भी करेंगे. ओके. सो पहले तो मैं ये ब्लॉक्स निकाल देता हूँ. सो मेरे पास 2 ब्लॉक्स है, ऑन स्टार्ट एंड फॉर एवर. सो ऑन स्टार्ट पे मैं डाल रहा हूँ सीरियल, प्रिंट ऑन सीरियल मॉनिटर. सो print to serial monitor. On start I am saying let's paint the RGB. So I am going to paint the RGB. Next, अभी मेरे कौन से इस पे कौन से पिन्स है हमको ये याद रखना है. तो देखिए, याद रखिए, मेरा जो रेड पिन है वो 9 नंबर पे है, रेड. फिर ब्लू वाला जो पिन है वो 10 नंबर पे है और ग्रीन वाला जो पिन है वो 11 नंबर पे है. तो हम सबसे पहले पिन्स डिसाइड करेंगे. सो आई एम सेट पिन 9. I'll select 9.
ना ये वाला नहीं, set pin, wait, I'll take another block, I'll create a variable. So मुझे इधर high low नहीं करना है, set pin 3 and I'll create a variable, its name is R. Okay, so set pin 9, sorry 3 नहीं, गलती से 3 हो गया, set pin 9 to R, that is red. अभी उसी तरह डुप्लीकेट 9 फिर 10, so create variable R फिर blue, so B and again duplicate, set pin 11, I'll create a variable red, blue, green, so G, so I'll take this G and I'll put it here. ओके, सो पहला स्टेप हो गया, मैंने सारे पिन्स बता दिए कि 9, 10 और 11 पे मेरा 9 पे रेड है, 10 पे ब्लू है और 11 पे ग्रीन है. ओके, नाउ आई विल टेक कंट्रोल इनपुट सेट R or set R, I'll take the pin, सीरियल पिन में ब्लॉक ढूंढ रहा हूँ, वो कहाँ पे चला गया. इनपुट ये ब्लॉक्स ढूंढने पड़ेंगे. सेट पिन R2, कहाँ चला गया. RGB, अब मुझे वो पिन्स को रीड करने को डायरेक्ट करना है. आई नीड टू टेक दोज पिन्स and I need to direct it for the given input based on the analog which are connected on A0, A1 and A2. So I'll put it here. If you say so, do I have variables? Set pin R, can we put it here? No. Where do I get this? I'll use this only. Oh, sorry. So set pin R. Okay, I'll have to use now compare, and then I will have to use the function just a moment. इसको मैं set pin R2, so I'm giving a command set pin R2. Now I am taking an input. Now I need to read analog pin, so set pin R to read analog pin A0. Okay, so set pin R to read analog pin A0, and I will use a division function divided by. Now why this is done, ये हमारा पल्स विथ मॉड्यूलेशन का फॉर्मूला है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो भी इस पिन पे वैल्यू है इसको हम डिवाइड करेंगे 4.01568. Okay, so what I have done, I have converted my analog to digital output in voltage, और ये उसका फॉर्मूला है. So I'll duplicate this, I'll place it here. So इधर में set pin R हो गया, G blue, sorry, set pin blue to read analog A1, and similarly duplicate green to A2
Okay, so see, my program is nearly ready. So what I've done, जब मैं शुरुआत करूंगा, when I start, I'll get print to serial monitor. Let's paint the RGB and where the cursor will go to move line, new line. Then in forever loop, my pin number 9, 10 and 11 are my R, G, R, B and G. Now I am taking R and telling R to read analog pin A0 divided by 4.01568. 01568, yes. So to convert whatever analog values I am getting into actual voltage. So let us see. Here you can see a code here in C language has been created simultaneously. So let's start the simulation. So I can see, as you can see now I am increasing. So I can see this color red. So I'll change this. So blue. I will change this. So I can create whatever color of my choice. See, and whatever shade I want to create. मुझे अपने मन का कलर क्रिएट कर सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ, और जो भी कलर मुझे जो भी शेड का चाहिए वो भी बना सकता हूँ. तो I hope you have understood the program and the project. It's a wonderful project. आप घर पे भी ट्राई कीजिए और आपको मजा आएगा. इसमें हमने 3 पोटेंशियोमीटर्स यूज किया है जिससे हम RGB का अलग अलग कलर्स को कंट्रोल कर रहे हैं फ्रॉम 0 to 5 volts. अब देखिए. ओके, I can mix all the colors and make it white. See, थोड़ा whitish हो गया. तो आई होप आपको आज के वीडियो में मजा आया होगा, कुछ सीखने मिला होगा. आई होप यू मस्ट हैव लर्न समथिंग टुडे. So I do tell you to please practice at home and do follow my channel, do subscribe and do share with everyone, all your friends. Thank you. Jai Hind.